नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, एक्स बैंकर and IBPI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. Today we shall discuss on credit counseling. So credit counseling is the process of educating the borrowers about how to avoid incurring debts that cannot be repaid, as also how to manage the debt burden and repayment commitments in respect of a number of debts. ये उन कस्टमर्स के बारे में है जिन्होंने नंबर ऑफ डेट्स ले रखे हैं, परेशानी में आ गए हैं, बिजनेस खराब हो गया है, नौकरी चली गई है और अपनी सिविल रिपोर्ट कैरी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी नहीं कर पा रहे हैं और बैंक की अ, स्थितियों को डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी काउंसल देम, how can we counsel them to repay their credits with a respect, with a dignity, and without impacting their civil reports? This process is actually more debt counseling than a function of credit education. In credit education, we used to tell about the customer about the products that are offered by the bank on, that is on the products like housing loan, vehicle loan, etc. But this process is about the counseling on a debt. Credit counseling often involves negotiating with banks to establish a debt management plan for a customer. तो क्रेडिट काउंसलिंग बैंक के साथ बैठ करके डेट मैनेजमेंट प्लान है कि आप अपने डेट को कैसे रिपे कर पाएंगे। A DMP may help the debtor repaying his or debt by working out a repayment plan with the bank. तो जहाँ थोड़ी सी परेशानी आ गई है, टूट हो गई है, एनपीए की तरफ बढ़ रहा है, बैंक के साथ बैठ करके आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे-कैसे उसको रिपे करने में मदद करेंगे। DMP usually offer reduced payments, fees, interest rates to the borrower. तो डीएमपीस के दौरान बैंक कोशिश करता है कि उस इंस्टॉलमेंट्स को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, जो वारंटेड फीस है उससे थोड़ा राहत दी जाए और कहीं हो सकता है इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी हो सकती है तो उसको भी फेवर किया जा सकता है। रिकवरी एजेंट रेफर टू द टर्म्स डिक्टेटेड by the bank to determine payments or interest reductions offered to customers in a debt management plan. तो रिकवरी एजेंट वही बता पाएगा जो उसके बॉसेस कहेंगे, बैंक कहेगा, एज पर क्रेडिट पॉलिसी होगा, एज पर रिकवरी पॉलिसी होगा। So what is debt management program? Once a customer has come under a DMP, the bank will close the customer's various accounts and restrict any future charges in the accounts. कस्टमर के 3-4 लोन अकाउंट्स को बंद करके उनके ऊपर फ्यूचर चार्जेस को रिस्ट्रिक्ट करके एक डीएमपी प्लान बनाया जाता है। The most common benefit of a DMP is the consolidation of multiple monthly payments into one monthly payment, which is usually less than the sum of individual payments previously paid by the customer. Suppose a customer has 3 to 4 loans and each loan have a EMI of say 1000 rupees, so he has to pay 4000 rupees per month on all the 4 accounts. But he is not having such minimum income to repay 4000. He is able to pay 2500 or 3000. So bank used to consolidate all the 4 accounts, extend the period and manage like that he has to pay 2500 per month to make them happy on both the sides. That is win-win situation on both the sides, that is on the bank side or as well as the customer side. This is because credit card banks will usually accept a lower monthly payment from a customer in a DMP than if the customer were paying the account on their own. तो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज के संबंध में कई बार देखा गया है कि इसको इजी टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
Some DMP advertise that payments can be cut by 50%, although a reduction of 10 to 20% is more common. अगर कोई कस्टमर अपने आप से क्रेडिट कार्ड ड्यूज को बंद कराने के लिए पेमेंट करने के लिए आता है, तो बैंक कई बार 50% तक उसको राहत दे देते हैं। Refacement. Another credit counseling is refacement. Second feature of DMP is a reduction in interest rates charged by the creditors. तो इसमें क्रेडिटर कोशिश करते हैं कि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए। जो कस्टमर डिफॉल्ट होने पर 24 से 36% तक इंटरेस्ट झेल रहे थे, अगर उनको रेगुलराइज पेमेंट देने के लिए कहा जाए, तो वही इंटरेस्ट घटकर 12-13% पर आ जाता है। Upon joining a DMP, credit card banks sometimes lower the annual percentage rate charged to 15 to 20%, or more or less, or a few eliminate interest altogether. So there is one example: a customer owes money with a monthly payment of 15,000, which has not been paid in 2 months. This will be considered by the creditor to be 60 days past. Definitely, it is in the SMA 1. After joining the DMP, making 3 consecutive monthly payments, the creditor could re-age the account to reflect a current status. Thereafter, the monthly repayment due on the statement would be monthly repayment negotiated by the DMP. DMP gives a fresh start and opportunity for the customer to begin building a positive credit history. तो उसको इस तरीके से प्लान किया जाए कि उसका इंस्टॉलमेंट बर्डन कम कर दिया जाए, एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, एक क्योंकि बैंक इज हैविंग ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर के पास भी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के एवेन्यूज होते हैं। ए कस्टमर इज हेवीली इंडेटेड, हाउ कैन द रिकवरी एजेंट काउंसल हिम टू मैनेज हिज डेट? बोरोवर टू प्रायोरिटाइज हिज डेट, वह बोरोवर को कहेंगे कि वे अपने डेट को प्रायोरिटाइज, सब डेट्स को एक लिस्ट कीजिए, रैंक कीजिए अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, concentrate on paying off the higher interest debt first. Higher interest debt को पहले पे कीजिए, क्योंकि उसको पे करने से उसको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो लोअर इंटरेस्ट के रेट में प्रिंसिपल में चला जाएगा। सो दिस वे ही विल हैव मोर टू पे of each debt on his list, with the benefit of these payments have already built into his budget. Be sure to continue to pay the minimum amount owing on his remaining debt. So दूसरे डेट पर भी उसको मिनिमम अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ताकि वो एनपीए की सिचुएशन से बाहर रहे और वो लोन भी परफॉर्मिंग रहे। बैंक से बात करने से बात बनती। Most banks would rather find a suitable repayment plan for the borrower than have his payment overdue or worse, or lose a debt together. कुछ बैंक हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में रहते हैं, वह कस्टमर को खोना नहीं चाहते। कस्टमर इज अवर ब्रांड एम्बेसडर, वह आज थोड़ा कमजोर है तो कल ताकतवर हो सकता है, बैंक के पैसे दे सकता है, बैंक के अच्छा कमाऊ कस्टमर हो सकता है, तो उसको लूज करने से बेहतर वो उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। If a debtor cannot make his payment or struggling to make the payments on time, it is important that he contact the bank. बैंक से बात करें। Explain the bank that he want to pay in full, but that he needs more time to pay. ज़्यादा समय चाहिए। Provide full details of his situation. Emphasize the positives. Explain that he is taking steps to reduce his spendings and show his budget plus a suggested repayment plan showing a specific amount allocated to repaying each bank. तो अपना प्लान बताने के बाद बहुत कुछ संभव है कि बैंक will revise his repayments and extend the time he has to pay. So another option is consolidate debts. Debt consolidation involves combining all debts into one loan. This can have many advantages, including reducing minimum monthly repayment, establishing a payment structure that will see the loan paid off in a structured way, and setting a fixed monthly payment that helps with budgeting. So,
This is from my side. Then Dhanyavad. This is for awareness purpose only. Before taking any action, kindly go through the relevant guidelines. बहुत बहुत धन्यवाद.